जरा रुको, मैं भी आया। देखा, लाइन लगी नहीं कि खत्म, फटाफट काम, कितनी सुविधा, कितना आराम। यही है स्टेट बैंक की टेलर सेवा, हमारी 2000 से भी अधिक शाखाओं में उपलब्ध। Yes, so here we are. So how long have you been into banking? I'm not in banking. I'm not a banker, no. She's not into banking. Then why do you keep talking about banks? So I'm a journalist, and banks are obviously a very large part of our lives. We pay for the banks in our country, especially the PSU banks are actually paid for. They're owned by and paid for by the taxpayer, who's you and me. And you keep your money in the bank, and so it's important to keep an eye on what's going on with the banks. No? Why do other journalists are not doing this? Do you have more money in bank maybe? No, I think as a result, I have less money in the banks than the other journalists. Maybe they don't think it's important. मेरा नाम वरुण सुखराज है। मैं फिल्में बनाता हूं और इस देश का एक आम नागरिक हूं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह फिल्म किस विषय के बारे में है, लेकिन यह फिल्म सिर्फ बैंकिंग के बारे में नहीं है। यह फिल्म है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए एक देश के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में, भारत के बारे में। कम से कम हर न्यूज चैनल में तो हमें यही बताया जाता है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, पर आगे उसी बुलेटिन में यह भी बताया जाता है कि यह देश अपने इतिहास में सबसे ज्यादा कर्जे में आज डूबा हुआ है। कुछ ही साल पहले भारतीय इकोनॉमिस्ट प्रभात पटनायक ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज सिटिंग ऑन अ लाइव वोल्केनो, और जो कभी भी फट सकता है। इट वॉज अ वार्निंग। कितनी सच्चाई थी इस वार्निंग में, यही जानने की यह कोशिश है। बस एक छोटी सी बात समझनी है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था सच में सही दिशा में बढ़ रही है, या फिर यह पूरा का पूरा एक इल्यूजन है। मानवी जीवनाचा इतिहास आणि त्यातले जर टप्पे बघितले तर ब्रिटनमध्ये जेव्हा वाफेच्या इंजिनाचा शोध लागला तेव्हा उत्पादन प्रक्रियेला एक गती मिळाली आणि ते जे युग होतं ते मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपिटलचं युग म्हणून ओळखलं जायला लागलं. नंतर आपण बघितलं की ब्रिटिश लोक, फ्रेंच लोक, पोर्तुगीज किंवा डच हे तराजू घेऊन जगभरात फिरले आणि ते जे युग होतं ते मर्कंडाईज कॅपिटल युग म्हणून ओळखलं जात होतं.
आणि आजचं जे युग आहे हे फायनान्स कॅपिटल युग म्हणून ओळखलं जातं. त्यामुळं फायनान्स आणि त्यातही विशेष करून बँकिंग याला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. The bankers take deposits from people and then lends that money to the businesses after investment, after making that production, selling that product, return the bank the money which they borrowed with interest. And that interest makes the banks profitable as well as serve the banks to provide interest to the depositors. तो क्रेडिट सप्लाई करने वाली व्यवस्था जो बैंकिंग व्यवस्था है ये किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बैकबोन होता है. भारत में भी बहुत लंबा इतिहास है बैंकिंग का. लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की व्यवस्था देखें तो कुछ निजी बैंक थे, कई डूब जाते थे, लोगों का पैसा डूब जाता था. फिर सरकार ने उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई जैसी व्यवस्था तैयार की, तो आरबीआई एक रेगुलेटर बन गया. Our banking system needs appreciation because of continued efforts to improve their strength, financial strength. They are more society friendly. They are in compliance with RBI and Reserve Bank of India guidelines. Our banks are in line with the international standards also. The Indian banking system, which is mostly PSU, I think 60% of our banking system is PSU, which means that public service, you're meant to serve the public. That you're supposed to serve the poor. That's why those banks are owned by the public and paid for by government money. The Indian banking system has now reached a point where it favors rich people over poor people, to put it very simply. एक बात समझना जरूरी है, बैंकों में जो पैसा होता था वो लोगों का पैसा था, आम जनता का पैसा. और ये आम जनता का पैसा देश के काम आ सके, अपनी देश की तरक्की के लिए काम आ सके, इसीलिए बैंकों को नेशनलाइज किया गया. Public sector bank took not one but 1,000 blows. What happens to the public sector bank in sum is what the Chinese called death by 1,000 cuts. Old saying, death by 1,000 cuts. One of the 1,000 cuts is encouraging ridiculous private sector bank enterprises. Now those banks, Axis, Yes, all these guys, they go bankrupt with lots of public money, and then what do? You get the public sector bank to absorb their losses. Banks with zero NPAs have been forced to take up these guys. So that's, I said 1,000 cuts, I can find 1,000 cuts. You might find more than that also. The non-performing asset is simply a loan which has gone bad. What is a loan which has gone bad? A loan on which the interest and the principal or both are not being paid on time. So the borrower is not able to service the loan, and the person goes into what is called default. So the interest payment doesn't come on the scheduled date, and the principal payment doesn't come on the scheduled date. And if this goes on for a specified period, which is 90 days, the loan is classified as non-performing. The bank is in the business of making loans. That's the reason why it exists. That is why where it makes its differential money. Due to natural calamities, farmers have not been able to repay. So in that regard, the accounts certainly become non-performing assets. Where there is a demand recession, industries also fail to make the installments in timely. In that, the accounts become NPA. Now you lend into businesses. Businesses are not 100% sure shot that every business will succeed. And when they fail, they will not repay the bank. I think the important thing to understand is that non-performing assets are a cost of doing business. If you're in the business of banking, you will have non-performing assets. And if you have non-performing assets, some write-offs are inevitable. I would like to humbly submit that writing off is not completely waiving the amount. As a part of the accounting process,
banks make a provision for the amount which is due from the NPA account, and in that process, we call it as writing off, but the provisioning is made, and the pursuing of that particular defaulter or the NPA which owes money to the bank is followed up. Reasons for NPAs are classified into two categories, external and internal. External, we are very sympathetic, and the Reserve Bank, the banks and the government work out the certain schemes whereby the non-performing borrowers are accommodated wherever they are affected by the natural calamities. In agriculture, we have a loan waiver scheme. Trouble comes into the other part of the non-performing loan story, which is where you are lending to the businesses or to the people who have no intention to do business and make money and to repay. Particularly, there are borrowers who misuse the funds. We call it as siphoning of funds, diversion of funds, mismanagement of funds. These are the internal reasons. So in this regard, we are very strict. We generally call them for the discussion. We give them certain period. If they do not do it, then we will immediately go in for the legal action. This is for the first time in India that a law of this kind was being put into operation. This was necessary because those who cannot run businesses and have literally made the businesses insolvent, an exit had to be found for them. मला आठवतं आम्ही त्यावेळी अरुण जेटलींना जेव्हा भेटायला जायचो थकीत कर्जाच्या प्रश्नावर, ते सांगायचे बघा आता इन्सॉल्वन्सी ऍक्ट येतोय आणि तो आला की जादूच्या छडीसारखं हे सगळे जे मोठे कॉर्पोरेट आहेत ना ते रांगा लावून बँकांची थकीत कर्ज परत करतील. आम्हालाही वाटायचं हे बरोबर आहे. तो दिवाळखोरी कायदा आला, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलची प्रक्रिया सुरुवात झाली आणि आश्चर्य म्हणजे पहिली जी 12 अकाउंट रेफर केल्या गेली होती त्या 12 अकाउंटमध्ये फक्त 60% पैसे वसूल झाले आणि 40% पैशाला हेअरकट म्हणून माफी द्यावी लागली. Just because an asset has turned non-performing, it doesn't mean that you're going to lose 100% of it. You may lose 10%, 50%, 70%, 80%. When you write off the asset, it means that you recognized a 100% loss. The Reserve Bank of India has released its financial stability report for December 2025. Public sector banks have written off a staggering 12 lakh crore in corporate loans over the last decade. खबर आई है कि भारतीय बैंकों ने 12 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया है. Shocking bit of data has emerged. The government-owned banks in India have written off around $40 billion worth of loans in more than 3 years. पिछले 5 सालों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाला है. इसका सीधा मतलब है कि ये रकम अब बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटा चुके हैं. हम सब ने ये खबर देखी, पढ़ी, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया. पर क्या हमने सोचा 12 लाख करोड़ होते कितने हैं? मिड डे मील योजना पर हम सालाना 30,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं. सोचिए 12 लाख करोड़ रुपए में 40 सालों तक ये योजना चल सकती थी. हमारा पूरा केंद्रीय शिक्षा बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए सालाना है. इन पैसों में 9 से 10 सालों तक हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली काम कर सकती थी. केंद्रीय स्वास्थ्य मिशन का सालाना बजट 37,000 करोड़ रुपए का है. इन पैसों से 32 सालों तक हमारी स्वास्थ्य योजना चल सकती थी. मनरेगा, जिसे अब पूज्य बापूजी योजना कहा जाता है, इस योजना पर हम सालाना 60 से 70 हजार करोड़ रुपया खर्च करते हैं. सोचिए इन 12 लाख करोड़ रुपयों से आने वाले 20 सालों तक इस देश के लोगों को रोजगार की गारंटी दी जा सकती थी. पीने के साफ पानी का हमारा सालाना बजट 70,000 करोड़ रुपए का है. आने वाले 17 सालों तक हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाना इन पैसों से हमें पॉसिबल होता. और इन्हीं 12 लाख करोड़ रुपयों में अनंत अंबानी 240 बार शादी कर सकते थे और पूरा देश झूम उठता. 12 लाख करोड़. पीढ़ियों की भूखमरी, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान का ये इलाज था. हम ये कोई हवा में गणित नहीं लगा रहे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ गणित का नहीं, ये सवाल है नैतिकता का. क्योंकि ये पैसे ये इस देश के सपनों के पैसे हैं. तो फिर सवाल उठता है कि इन सपनों के टूटने की जवाबदेही आखिर किसकी है? Recognizing a 100% loss doesn't mean actual 100% loss, because you can still try to recover after having recognized the loss.
So on the books, you don't want to show it as a non-performing asset anymore, because you want to you want your balance sheet to look good by not having a very high proportion of assets. So out of the profits that you're making, you absorb the loss for now and write off the asset. At the same time, you go after the borrower and try to recover as much as you can. We first send a reminder. Then we pay the personal visit to the place where the borrower stays. If there is a genuine reason is there, we accommodate. We grant more time. Like a machine is there, a breakdown is there. So then we provide a further loan to see the machine is operated, and then the orders are executed. If the account becomes sick, unit becomes sick, then rehabilitation package is also worked out. Then the debt restructuring, where the borrower says that I am ready to close the loan account, but I do not have sufficient income. Then we rephase the account, means installments are rephased and all that. If the borrower is deliberately not paying the installments, then legal action is thought of. If the amount is so small, there is no point in going to the court. So we prefer the write-off. So a write-off is generally recommended in case of small loans. The SR Group, 11,000 crore guarantee in a company called SR Finance. When it went to debt recovery, both Ravi Ruya and his nephew Prashant Ruya said, we don't even have property. Okay, so what is the meaning of that piece of paper saying personal guarantee? The personal guarantee has to be against some assets. The problem arises when you write off an asset and you also make zero recovery. So that is the thing which causes the most outrage among the public, because basically you're throwing up your hands and saying that I've lost all the money which I lent, which is not a happy situation. But when the government gives away 1 lakh crore, 2 lakh crore every year in the budget, you don't realize that even the guy who can't afford glucose biscuits in remote India is paying a price, because it comes out of money that should go to social welfare, healthcare, education, medicine, infrastructure. That is the money that's going to recapitalize banks, right? Why is it easier for a journalist to find willful defaulters and not RBI? I think that anyone who wants the list can get it. It's available in the public domain. I mean, I always thought it was astounding to me that people were not embarrassed that their names were on these lists, right? And willful defaulter basically means that you have the assets to pay back the loan, but you're just choosing not to. So does that mean that easiest way to make billions in India is to borrow it? If you can get someone to give you that loan, then yeah. सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत, इसी अदालत में एक सुनवाई चल रही थी। सुनवाई का विषय था पब्लिक बैंकों के बढ़ते हुए कर्ज, और वकील ने जज साहब के सामने विलफुल डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट रखी। विलफुल डिफॉल्टर्स यानी ऐसे लोग जिन्हें पॉसिबल होते हुए भी वो अपना लोन रिपे नहीं कर रहे हैं। जज साहब ने लिस्ट को देखना शुरू किया, 1 page, 2 page, pages after pages, pages after pages, and he was surprised. उन्होंने वकील से पूछा, इतनी लंबी लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स की? उस पर वकील का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, ये लिस्ट सिर्फ उन विलफुल डिफॉल्टर्स की है जिनकी लोन अमाउंट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जज साहब सरप्राइज हो गए। सोचिए, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की। इस सुनवाई के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लिस्ट पब्लिक करनी पड़ी। So there were these promoters who were dishonest, who were taking money from banks, siphoning out that money by over-invoicing, under-invoicing, etc. Thereafter becoming bankrupt and not paying back the loans. And yet the banks were still giving loans to other companies by the same promoters, etc. किंगफिशर मल्ल्या हे भारतातल्या विलफुल डिफॉल्टरचं, ज्याला आपण भगोडे थकीत कर्जदार म्हणतो, याचं फार चांगलं उदाहरण आहे. त्यांनी युनायटेड इंजिनिअरिंग साठी एक कर्ज घेतलं होतं. ते कर्ज तो फेडू शकला नाही. वन टाइम सेटलमेंटसाठी त्याने अर्ज केला. बँकेने त्याला व्याजात आणि काही प्रमाणात मुद्दलामध्ये माफी दिली
आणि ते अकाउंट OTS खाली सेटल झालं. त्याच्यानंतर युनायटेड स्पिरिट या एका ग्रुप कंपनीचं प्रपोजल त्यांनी पुन्हा बँकेकडे दिलं. Bank of Maharashtra suddenly gave 350 crores loan to Vijay Mallya when he was already in trouble. व्हिसल ब्लोअर म्हणून आम्ही बँकेच्या निदर्शनास आणून दिलं की त्याला दुसऱ्या एका कर्ज प्रकरणामध्ये, थकीत कर्ज प्रकरणामध्ये OTS खाली आपण व्याज माफ केलेलं आहे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाप्रमाणे त्या ग्रुपला पुन्हा नवीन कर्ज मंजूर करता येत नाही. आणि जर बँकेला ते मंजूर करायचं असेल तर बँकेनी OTS खाली जे कर्ज माफ केलं ते पूर्ण त्याच्याकडून व्याजासह वसूल करावं. With the help of the Bank Employees Association, I got the data. They were planning to give him, they'd given him 150, he was in line for 350. They were going to make that 350 crores without recovering a single paisa of the first. युनायटेड स्पिरिट खाली जे कर्ज घेतल्या जाणार होतं किंवा त्यांनी घेतलं त्याचा उपयोग युनायटेड स्पिरिटसाठी नव्हता, तर तो किंगफिशर जे अडचणीत आलं होतं त्याच्यासाठी होता. I did that story on the front page of Hindu and the deal was scuttled. The RBI cracked down on it. All sorts of things happened. So the Reserve Bank was forced to come out with a system of declaring willful defaulters, which meant that Reserve Bank will say if a person has defaulted and if the bank says that they have siphoned out the money or that they have the capacity to pay back the money and still they are not paying back the money, then they are declared willful defaulters, in which case two things are supposed to happen. No further loans to this company and no further loans to companies run by the promoters of that company. Secondly, there has to be a CBI investigation into the siphoning out of funds, etc., because this is a criminal offense. Where is accountability? Everybody realizes, look at what happened with Gitanjali Diamonds or what happened with all the absconding guys. Suraj Diamonds changed the name. He apparently had kiosks which he called diamond cutting. He's sitting abroad. There's no attempt to get him back at all. There is Sandesra, who is thriving. He's got an oil business in Africa. He's hosting parties and he's blowing up money. He's got super tremendous money. He wants to pay less than 40%. The whole family is absconding. I mean, I must have written 8 or 10 articles about it. There is no attempt to bring him back. They try to make it a Congress issue, but it doesn't matter which party. You have to get him back and make him pay. He has the money. भारत की बैंकिंग व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बबल बन गया है. बहुत खतरा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से निजी कंपनियों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, डेट राइट ऑफ हो रहा है, जो हमारी जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं उनको पुनर्जीवित करने की व्यवस्था है, वो भी बहुत दोषपूर्ण है. तो मुझे बैंकिंग व्यवस्था एक बबल पे खड़ी है और वो कभी भी बबल फूट सकता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था एक क्राइसिस में आ सकती है, ऐसे मुझे अंदेशा लग रहा है.
मोनोपोली, एकाधिकार। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसका एक छोटा सा नमूना देखा। सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे रहे। किसी को अपने घर जाना था, किसी को अस्पताल जाना था, तो किसी को खुद की शादी में जाना था, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि एक कंपनी के ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई और ज्यादातर उड़ानें उसी एक कंपनी की थी जिसका नाम था इंडिगो एयरलाइंस। There is only one airport in a city. So if you hand over an airport to a private company, it becomes a private monopoly. So for example, Adani has been handed over virtually most of the airports and most of the ports in this country. But the day Adani's companies collapse, all these ports and airports will become dysfunctional. And these are monopolies given to Adani. अब इसी बात को थोड़ा वाइडर एंगल से देखते हैं। सोचिए, कई सारे बैंक कम होते 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 एक दूसरे में मर्ज होते होते कुछ ही चुनिंदा बैंक बचे रहे, और फिर उसमें से एक आध बैंक में अगर गड़बड़ी मच गई तो इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर होगा। क्या मतलब है? In early October, Rakesh and Sarang Wadhwan, the promoters of HTIL, were arrested over alleged irregularities at Punjab and Maharashtra Cooperative Bank or PMC Bank. The Economic Offences Wing of the Mumbai Police said the fund diversion was pegged at 6,500 crores, a staggering 73% of the bank's entire assets. My name is Sunny Fernandez and PMC Bank scam victim. Unfortunately, my entire life savings is stuck in this bank. So that's a brief about me. If I may ask, what was the amount that was with the bank, or your money with the bank? It was more than 1 CR. The reasons for depositing this money in the bank was, this was one of the bank with whom I was having transactions since year 2002. The NPA of this bank was then less than 2%. साधारण माझी जवळजवळ 34 लाख रुपये अमाउंट त्याच्यामध्ये होती. मेरा पैसा बंद है, मैंने एफडी में डाला हुआ है. हमको 70 साल की उम्र में हमको रोड के ऊपर लाके रख दिया है. इससे ज़्यादा वो क्या हो सकता है? ये बोल रहे थे कि पहले अच्छे दिन आएंगे और ये अच्छे दिन है हमारे मोदी की सरकार में. नोटबंदी हुई, फिर बाद में अभी ये बैंक बंद हो गया. हम क्या करेंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे हम? जब बैंक हमारे साथ ऐसा धोखा देंगे तो हम आगे क्या करेंगे? हम लोग सीनियर सिटीजन है, एफडी का पैसा रखा तभी भी वो कंपनी बैंक ने कुछ बोला नहीं है. अभी हमारी तो हालत खराब हो गई. हम सीनियर सिटीजन है, हमारा कोई इनकम नहीं है. 6 महीने तक पैसा ही नहीं मिलेगा तो ऐसा कैसा होगा? पब्लिक का खाना पीना कैसा चलेगा? और एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और हम लोग ने लोन लिया है, वो लोन बैंक को भरना है. आदमी जो गवर्नमेंट में था ना, जो आप हो गए, पूरा पैसा इधर डाला है. 6 मंथ में बोला हजारों मिलेगा. 6 महीने हजारों क्या होगा? आदमी का घर चलाएगा, क्या करेगा? पूरा पेमेंट अंदर अटका पड़ा है. आदमी किससे लेगा वो? आप बताइए. गरीब आदमी रो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? 6.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 1000 रुपए कब तक निकालते बैठेगा? हमारा भाई मर जाने के बाद पैसा क्यों दोगे? नहीं लूंगा मैं. मेरा पैसा मुझे मेरे भाई मरने से पहले चाहिए. रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है. रो मत, पैसा मिलेगा. थोड़ा प्रॉब्लम पीएमसी बैंक के ग्राहकों में उनकी मेहनत की कमाई डूबने का डर बढ़ता जा रहा है.
महज 48 घंटे में पीएमसी बैंक के 3 ग्राहकों की मौत हो चुकी है। संजय गुलाटी और फत्तोमल पंजाबी के बाद वर्सोवा के एक डॉक्टर निवेदिता बिजलानी ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। This bank had got the best rating from RBI. Okay. Now, what more does a person want? Health-wise, PMC Bank, one of the best bank. Top management of that bank acted against the interest of that bank. In fact, whistleblower from that bank had represented to Reserve Bank of India. But as usual, RBI didn't took it that seriously as they should have taken. रिझर्व्ह बँकेचे याच्यामध्ये भरपूर लॅब्स आहेत. त्यांनी जे तुमचं ऑडिट करतात तेव्हा तुम्हाला ते सांगतात की अनेक फ्रॉड अकाउंट्स त्यांनी उघडली वगैरे, पण 2011ला तुम्हाला कळलं तेव्हा तुम्ही का नाही ऍक्शन घेतली या सर्व गोष्टींवर? It is a joke on us. Now, suppose I am the MD and my so-called CEO, Joy Thomas, I was not getting his name. We both are the ones who are robbing the bank. There's an employee who is telling RBI that, look, there is something going wrong. RBI is sending the letter to us. Please, can you investigate? This is how well RBI is doing their job. Aggrieved PMC Bank depositors and shareholders plan to move courts against the approved scheme of amalgamation between PMC and Unity Small Finance Bank as they're unhappy with several terms, but most of all, depositors are unwilling to wait 10 years to see their money. The final merger plan proposes to repay depositors in a staggered manner over a 10-year period. Secondly, the scheme also says that depositors will get no interest on their deposits for a 5-year period after the 31st of March 2021. When the amalgamation scheme was announced by Government of India, we come to know the depositors are not going to get the money immediately. They are going to get the money after 5 years and after 10. For some depositor who has money are more than 15 lakh rupee after 10 years. So that means after 5 years, technically it is 7 years because first 2 years nothing happened. So after the end of 7th year, you get 15 lakhs, out of which 10 lakhs was without a penny in interest. And what happens after the 6th year to the 10th year is even more inhuman. You get your entire money at the end, which is 35 lakhs, which you're supposed to get. And in those 5 years, you get an interest of 2.65%. I mean, is this justice? My age is around 78 now. And I'm going to get my money by the 2032. I do not know for next 7 years whether I'm going to survive and whether I will get the money when I'm alive. माझा पाठीचा मोठा ऍक्सिडेंट झाला होता तेव्हा हे झालं तेव्हा मी मेडिकल बिल माझं सबमिट केलं तेव्हा माझे 1 लाख रुपये मला मिळाले आणि माझं बिल होतं 5.5-6 लाख रुपयाचं. 1 लाख रुपयात मेडिकल कसं भागवणार मी? All the depositors' money, entire money I will put it, is insured by the bank. DICC is supposed to pay the depositor their full money because you are taking the insurance on the full money. DICCचा रोल खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यांनी 100% लोकांचे पैसे दिले पाहिजेत. लोकांच्या कष्टाचेच पैसे असतात ते, त्यांना ते पैसे घेण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांना ठरवण्याचा पण अधिकार नाही. Who the hell, sorry for the language, who the hell is RBI to decide how they'll pay me back my money? Can I decide how to pay my taxes if I don't pay it at that time? I want my money now. You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down in front of him yet. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Okay, perfect. That's what we're looking. हाँ बोल बेटा करण. क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं. अंकल. पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है. जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का. अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो. ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं. अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. I belong to Aurangabad, now called as a Chhatrapati Sambhajinagar. Here, some industrialists came together and they made a combined proposal of purchasing 100 Benz
Mercedes-Benz vehicles. And SBI management, they granted special concession to those industrialists, and ultimately at a 7% rate of interest, those 100 Mercedes-Benz car finance was extended by State Bank of India. It's a decision that can only come from the very top of the SBI. No local managing director, nobody is entitled to do it. At the same time, one of the lady, Hirabai Rathod, from Kannada Taluka, she was residing in some Banjara nomadic tribe areas. She availed a loan for tractor, and at that time she was charged a rate of interest 13%. Since she could not repay in time, the penal interest further 1.5%, it becomes a 14.5% rate of interest was charged to her. Mercedes-Benz gave its best discounts. It gave huge discounts, etc. on those vehicles. I buy 3, I buy 4 at heavily discounted prices, sell them the next day. I can sell them the next day at just below the market price. When Mercedes-Benz can be availed at a 7%, the tractor for a farmer, it was charged 14% or more than 14% interest rate. An agrarian crisis that you talked about it, people will easily finance Mercedes-Benz cars because they know that the person who's buying it has ability to service the loan, and they made profit out of their loan, so they're very happy to do that. But in case of a farmer in a backward, drought-prone district, they'll be reluctant to do it because they're not sure whether the farmer will get a remunerative prices. If they don't get a remunerative price, they will not be able to repay the loan. So the tendency to ignore that farmer. किसान लोन लेता है ताकि वो बीज खरीद सके, खाद डाल सके, अपने खेतों तक पानी ला सके, फसल उगाने की उम्मीद में। लेकिन हर बार मौसम साथ नहीं देता। कभी भारी बारिश, कभी सूखा, कभी अकाल, कभी मार्केट में भाव न मिलना, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव। इस सब वजह से उसका नुकसान होता है और इसी चक्कर में किसान लोन डिफॉल्टर बन जाता है। हमारे इस देश में सालाना तकरीबन 10,000 किसान अपनी जान दे देते हैं। सरकारें आती है, बदलती है, नई नई स्कीमें अनाउंस होती है, लेकिन इस तस्वीर में कोई बदलाव कभी नहीं दिखाई देता। इस देश के एग्रेरियन लोन क्राइसिस का यही असली चेहरा है। Banks have an important role in giving loans to small farmers for their crops. Suppose they need some money to buy seeds, they need some money to buy fertilizer, and at that time they need some loans, so those small loans have to be given. Similarly, street vendors, they may not have any assets which they can mortgage, but even then these people, for the growth of the economy, for their own benefit, need to be given that loan. Now private banks will not give them. It's only the public sector which can give them, but however the public sector has to function without corruption. See, the direct finance is what you directly give the farmer. Indirect finance is what you give to some of the institutions around that or various things like that. You can see that. Now, by 2011-12, direct financing was shrinking and indirect financing was growing, showing that non-farmers were getting the money. In 2013 or so, if I'm not mistaken, they just removed the distinction between the two, between direct and indirect finance. गेल्या 25 वर्षामध्ये पब्लिक सेक्टर बँकांच्या जी कर्ज वाटली त्या कर्जामध्ये पर्सनल लोन सेगमेंटमध्ये सगळ्यात जास्त कर्ज वाटले गेलेले आहेत। तुम्ही जर टक्केवारीच्या भाषेत रिझर्व्ह बँकेचे अहवाल तपासून बघितले तर तुमच्या असं लक्षात येईल की ॲग्रिकल्चर लोनमध्ये झालेल्या ग्रोथच्या कितीतरी पट अधिक ग्रोथ हा पर्सनल लोन सेगमेंटमध्ये बँकांमध्ये झालेला आहे। म्हणजे ती जी बाजारपेठ आहे त्या बाजारपेठेचं रिव्हायवल करणं, ती जगवणं, याच्यासाठी बँकांचा निधी वापरला गेला।
तोपर्यंत बँकांचा निधी हा प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्र आणि रोजगार निर्मितीसाठी, शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरला जात होता. You shifted credit from agriculturist to agribusiness, to corporates, to rich individuals, to small businessmen, etc. हे अनेकांना अचंबित करणारं वाटतं की मुंबईमध्ये सुईच्या टोकावर बसेल एवढी काळी माती पण नाही आणि तिथे हायेस्ट ॲग्रिकल्चर लोन कसं येऊ शकतं. पण हे वास्तव आहे आणि हे स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी ऑफिशियली जो डाटा पब्लिश करतं त्यात त्याचा उल्लेख केलेला आहे. In a state that is 55% rural, 45% urban, rural credit, 53% of it was being dispersed in urban and metro branches of Mumbai, Pune, Nashik. Metro branch, you're talking about Bandra, you're talking about Cuff Parade, you're talking about Malabar Hill. How many small farmers do you know there? विशेष गोष्ट म्हणजे मराठवाड्यातल्या 8 जिल्ह्यामध्ये जेवढी शेती कर्ज वाटली जातात त्याच्यापेक्षा मुंबई एका शहरामध्ये जास्त कर्ज वाटली जातात. विदर्भातल्या 11 जिल्ह्यामध्ये जेवढी शेती कर्ज वाटली जातात त्याच्यापेक्षा मुंबईमध्ये जास्त शेती कर्ज वाटली जातात. हे जे रिडेफिनेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर आहे त्या प्रोसेसमध्ये मुंबईमध्ये एखाद्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीला वाटलेलं कर्ज असेल तर ते डायरेक्ट ॲग्रिकल्चरमध्ये रिफ्लेक्ट होतं. एवढंच नाही तर श्रीराम ट्रान्सपोर्ट कंपनी सारख्या नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सला जर 4 व्हीलर पिकअप व्हॅनसाठी एखादं एक 10,000, 12,000, 15,000 कोटीचं कर्ज मंजूर केलं आणि त्यांनी जर बँकेला असं डिक्लेरेशन दिलं की ही माझी वाहनं शेतमालाच्या ने आण करण्यासाठी वापरली जातात, तर अल्टिमेटली ते देखील शेती कर्ज म्हणून गृहीत धरल्या जातं. When they shift from the rural areas to Mumbai and the urban branches, you're shifting credit from agriculturist to agribusiness. That is the historic shift. म्हणजे नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सना बँका कर्ज देतात, त्या NBFC शेतकऱ्याला कर्ज देतात. बँकेकडून जर तुम्ही क्रॉप लोन घेतलं तर 3 लाखापर्यंतचं कर्ज हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटची सबसिडी जर गृहीत धरली तर 0% मिळतं. पण तेच जर तुम्ही जॉईंट लायबिलिटी मॅनेजमेंट ग्रुपमधून केलं, NBFC मधून घेतलं तर त्याच्यावर शेतकऱ्याला 12%, 14%, 16%, 18% व्याजदर द्यावा लागतो. आणि याला जर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनमध्ये आपण हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टामध्ये चॅलेंज केलं तर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट एवढंच सांगतं की हे धोरण आहे आणि एक्सपर्ट म्हणजे रिझर्व्ह बँक ते इम्प्लिमेंट करते, आम्ही त्याच्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. आणि आज नेमकं हेच होतंय. कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ॲग्रिकल्चरची ही वाढली आहे आणि त्यामुळं शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो आणि मग त्याचं पर्यावसन शेवटी शेतकरी आत्महत्येमध्ये होतं. Prabhat Patnaik, economist, he has once said that Indian banking system is sitting on a live volcano. Would you concur that? I agree with that, and I'm saying the live volcano is surrounded by dead bodies of farmers. One of the basic reasons for the agrarian crisis is failure of the government to ensure that farmers get a remunerative price. There is no business in the world where you force a business to sell the produce of that business at a cost less than the cost of production. And only the state and its entities can do unprofitable activities. Now, when you privatize something, then profit is the only objective. All these areas will be neglected. You will find a neglect in agriculture, where the bulk of your employment of the economy resides. See, all this was happening prior to 1969. That was the socio-economic objective of bank nationalization. Now, if you are now to privatize those, you will go back to that same situation. रघुराम राजन जेव्हा RBIचे गव्हर्नर आले तेव्हा त्यांनी 2016 साली ॲसेट क्वालिटी इन्स्पेक्शन एक नवीन फंडा इंट्रोड्यूस केला की 5 कोटीच्या वरच्या प्रत्येक थकीत कर्जाची फेर तपासणी केल्या जाईल आणि जर ते कर्ज थकीत असेल तर बँकांना ते क्लासिफाय करून थकीत म्हणून जाहीर करावं लागेल. आणि मग बघाल तुम्ही 2016 नंतर 2017, 18, 19 सलग 4 वर्ष मोठ्या प्रमाणावर थकीत कर्जाने डोकं वर काढलं
आणि मग शेवटी पुन्हा एकदा पब्लिक सेक्टर बँका सगळ्या लॉसमध्ये जायला लागल्या. आणि मग पब्लिक सेक्टर बँका लॉसमध्ये गेल्या की प्रायव्हेटायझेशन शिवाय आता दुसरा कुठलाही पर्याय नाही अशी भलावण केल्या जाते. आणि सतत या पब्लिक सेक्टर बँकांच्या प्रायव्हेटायझेशनचा जो मुद्दा आहे तो मुद्दा एजेंडावर आणून त्याची खूप मोठ्या आवाजामध्ये चर्चा केली जाते. That it's not very easy to carry out the privatization of a bank in the Indian context. It's a politically rather difficult decision. And most importantly, what happens to a bank after it's privatized? How do you ensure that there is no failure thereafter? Remember, bank is in the business of lending. Because on the other side, there may be a person who is actually interested to take your money and not repay you. What is the business which he is doing? Is that business likely to succeed or unlikely to succeed? Now, that assessment requires, in fact, in my judgment, a mind which is superior to the mind of the businessman. But when you make the banks government owned, the bureaucrats take over, and their ability to think through or assess that risk in lending is far lower. Whether it is a demonetization, whether it's a corona, whether it's Janadhan, Jivan Suraksha, Jivan Jyoti, Atal Pension, crop loan, crop insurance, for everything, more than 90% achievement is by the public sector bank. But again, when it comes to profit, they will question the bank that in comparison to private sector bank, you are not profitable. If you expect bank to perform the role of social profit, both the things cannot go hand in hand. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या 14 ऑगस्टला रात्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी भाषण केलं. नियतीशी करार या नावाने ते खूप प्रसिद्ध आहे. आणि त्यात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वतंत्र भारताचं एक चित्र त्यांनी रंगवलं. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी नियोजन आयोगाची स्थापना केली. पहिली पंचवार्षिक योजना, दुसरी, तिसरी, चौथी लागू केली. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये उद्योग ही प्रायोरिटी होती. आणि उद्योग एवढ्यासाठी की त्यावेळी सुईपासून ते अगदी इलेक्ट्रिक मोटर असो किंवा मोटर असो, हे सगळं भारताला आयात करावं लागत होतं. भारताला स्वावलंबी करायचं असेल तर भारताचं औद्योगिकरण ही प्राथमिकता असली पाहिजे. या भूमिकेतून त्यांनी दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा थर्स्ट एरिया फोकस हा इंडस्ट्रियलाइजेशनकडे दिला. नेहरू जी के समय और इंदिरा जी के समय बैंकिंग में बहुत सारे बदलाव आए थे. उसमें रिटेल बैंकिंग जो है वो रिटेल बैंकिंग का निजीकरण किया गया. तो छोटे छोटे गाय के भैंस के कर्जे हैं या किसी को आटे की चक्की लगानी, उसके लिए पैसा ग्रामीण इलाकों में मिलना शुरू हो गया. लेकिन ये बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर है, उसके लिए बैंक रिटेल बैंकिंग वाले उस पर जाना उनका मुश्किल था. तो इसीलिए एक विजन आया कि हम कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएं. भारत में अगर देखें तो कुछ IDBI जैसे बैंक हो या IFCI जैसे हो, ICICI जैसे हो, वो सरकार ने विशेष आदेश देकर बैंक बनाए कि आप बड़े बड़ी प्रोजेक्ट इकाइयों को अप्रेज करेंगे, इसके लिए कितना कर्जा देना पड़ेगा, कितना कैपिटल लाना पड़ेगा. और अगर कोई निजी कंपनी आती है, बड़ा उद्योग, बड़ा कोई प्लांट बनाने के लिए, तो उसका अप्रेजल ये विशेष बैंकिंग संस्था है जिसे हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स कहते हैं. त्या IDBIची मालकी त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेकडे होती. पण नंतर रिझर्व्ह बँक एकीकडं इन्स्पेक्शन ऑडिट करतं म्हणजे रेग्युलेटर म्हणून काम करतं, दुसरीकडं ओनर पण हा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट येतो. त्यातून ती ओनरशिप भारत सरकारकडे गेली.
आणि मग भारत सरकार या IDBIचं नियंत्रण करू लागलं. दरवर्षी बजेट ठरवत असताना बजेट तयार करणारे लोक हे IDBIच्या टॉप मॅनेजमेंटशी चर्चा करून इंडस्ट्रीच्या गरजा काय आहेत हे लक्षात घेता बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करत असतात. इतपत त्या IDBIचं त्यावेळेचं स्ट्रेचर होतं. And a thought arose in the country in 90s that we should have some sort of universal banks, because before that the system was that the term loan should be provided by the institutions like IDBI and the working capital loan should be provided by the banks. So that was the neat kind of solutions. And that concept of universal banks, that every bank should also be able to do both kind of lendings, right? Short-term working capital as well as the long-term lending should be able to do. And when that came up, IDBI also converted into a bank. पण मधल्या काळामध्ये या IDBIनी जे इंडस्ट्रियल फायनान्सचं जे काय टार्गेटेड फायनान्सिंग होतं ते इतरही बँका करायला लागल्या. आणि मग जे काय भारतातल्या बँकिंगमध्ये NPAचा जो क्रायसिस आला त्याच्यामागचं एक कारण डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन म्हणून IDBIचा रोल जो ॲब्डिकेट केला गेला हे पण त्याचं एक कारण आहे. मग खुद्द IDBIनी जी कर्ज दिली ती पण काही सुप्रीम कोर्टामध्ये डिस्प्यूट गेले, प्रोजेक्ट बंद पडले, एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्सेस मिळाले नाही त्यामुळं प्रोजेक्ट बंद पडले. या सगळ्यामुळं IDBIचे पण NPA वाढले, IDBI अडचणीत आली. आणि मधल्या काळामध्ये काही IDBIचे जे टॉप मॅनेजमेंट होते त्यांनी भ्रष्ट मार्गाने कर्ज वाटली, तीही कर्ज थकीत झाली. एकूण या सगळ्याचा परिणाम म्हणून IDBI बँक ही क्रायसिसमध्ये आली. I think it was 2018-19, the government took first step. It sold a large chunk to LIC. The government's ownership came up from to less than 50%. So that is where the IDBI became a private bank in the sense. Despite having become private bank, when the recapitalization was happening for the public sector banks, the government did recapitalization of the IDBI bank also. We also insist that while IDBI have a government equity of about 58%, it can be brought down to 51%, but in no case can IDBI be allowed to be sold to a private sector through a merger, M&A route or whatever devious means. No, it will have to remain as a public sector entity with certain controls with the government of India of the day to direct policy lending. उस समय मुझे याद है कि मैं संसद में था और जब ये विधेयक आया तो हमने उसका विरोध तो नहीं किया पूरी तरह से, लेकिन हमने सरकार को कॉशन किया कि देखिए दुनिया भर की कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक रोल है. ये सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था का एक भाग नहीं है या प्लान्ड इकोनॉमी का भाग नहीं है, इसकी आवश्यकता है. अब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है कि आप पॉलिसी बेस्ड लैंडिंग करिए और नीति के चलते कि आपको एक स्टील उद्योग को बढ़ावा देना है तो आप स्टील उद्योग में फाइनेंस करेंगे, या आपको टेक्सटाइल उद्योग में ज़्यादा रुचि है तो आप सिर्फ टेक्सटाइल कंपनियों को लैंडिंग की बात करिए. Now, somehow we also felt, that bank IDBI or development bank only provides money. No, it also provided expertise. In IDBI bank, we have dedicated experts, those who used to help this industry how to grow, how to manage their problem, how to make it profitable. So we had one institution where you had varied services. But the moment it became privatization, I am sure the focus will be only on profit. There will be a drastic shift from what today that is making this country industrialized to a bank which is only meant for profit. There is where our main objection. देखिए एक व्यवस्था ऐसी चल रही थी कि भाई बैंकिंग सेक्टर में हमें निजी क्षेत्र को अब बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और सरकारी क्षेत्र क्योंकि उसमें कुछ बंधन होते थे कि आपको इतना कर्जा कृषि क्षेत्र को देना पड़ेगा, इतना कर्जा स्मॉल स्केल को देना पड़ेगा. ये जो रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से कि देश का विकास करने के लिए ज़रूरी है, निजी क्षेत्र ये नहीं करेगा तो ये सरकारी क्षेत्र को ही करना पड़ेगा. तो इसके चलते
प्रॉफिटेबिलिटी में फरक पड़ता था. 91-92 साली न्यू बँक ऑफ इंडिया लॉसमध्ये गेली तेव्हा पंजाब नॅशनल बँकेत ती मर्ज केली गेली. मग नंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बँकेत विलीन केल्या गेली. मग स्टेट बँक ऑफ बिकानेर जयपूर आणि मग सगळ्या असोसिएट बँका स्टेट बँकेत मर्ज केल्या. तो टप्पा झाला की देना बँक विजया बँक यांचं बँक ऑफ इंडियात मर्जर केलं गेलं. मग एक मेगा मर्जर आलं. त्या मेगा मर्जरमध्ये अलाहाबाद बँक जी 100 वर्षांपेक्षा जुनी बँक होती ती इंडियन बँकेत मर्ज केली. मग त्यांनी कॉर्पोरेशन बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या वेगवेगळ्या बँकांचं मर्जर कुठे पंजाब नॅशनल बँकेत किंवा आणखी युनियन बँकेमध्ये अशी किंवा सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँकेमध्ये मर्ज केली. ही मर्जर प्रोसेस केला. मर्जर झाल्यानंतरच्या वर्षामध्ये या सर्व पब्लिक सेक्टर बँकांच्या 6000 ब्रांचेस बंद झाल्या. संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे, संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे. सोऊं मैं फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, सोऊं मैं फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं. धागे को बनाया मैंने मिलों को चलाया, धागे को बनाया मैंने मिलों को चलाया रे. ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे. सपनों के रंगों से उनको सजाया रे, सपनों के रंगों से उनको सजाया रे. मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं, मुझे कफन नहीं रे कि मेरे लिए काम नहीं. रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया, रेल को बनाया मैंने सड़कों को बिछाया रे. हवा में उड़ाया रे चंदा से मिलाया रे, हवा में उड़ाया रे चंदा से मिलाया रे. नाव को चलाया मैंने पानी पे चलाया रे, नाव को चलाया मैंने पानी पे चलाया रे. मेरी न जिंदगी चले कि मेरे लिए काम नहीं. And now we are having 3 banks within IDBI. Old IDBI, then IDBI Bank, which merged with IDBI in 2005 April, and then United Western Bank in 2006. With all these political decisions, all these things, today IDBI has come out exceedingly well. They are making 7,000 crore profit, and even then, government has predetermined to destroy IDBI and make it into a foreign banking institution. However, the privatization, if it does happen, of IDBI, which is widely expected, could be a precursor to the privatization of the government banks. Now, that is something to be, I think, majorly concerned. Companies that are owned privately have only one sense of loyalty, and that is towards their shareholders. They're not there to look after their employees. They're not there to work for the betterment of society. They're not there to build your roads. That is the job of the public sector. The public sector is there to serve the public. So it makes sense then that a country like India has its own development bank, so that a country like India can decide that, hey, we're missing in this textile sector. We need to encourage our textile sector more. Yes. Let's put some muscle into understanding what they need, finding the right people, encouraging the right businesses, and building that sector. ज्या आयडीबीआयनी युनायटेड वेस्टर्न बँकेचं विष पचवलं, त्या आयडीबीआय बँकेला आज खाजगीकरणाला सामोरं जावं लागतंय. हा फार आयडीबीआयच्या दृष्टीने नाही, या देशातल्या डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि त्याच्यामुळे येणारी जी डेव्हलपमेंट आहे त्याच्या दृष्टीने पण हा दुःखांत शेवट आहे. I mean, the other thing about public sector banks is that they are required by law to have one director from the employees, one director from the workmen. But in the last 10 years since the Modi government has come, they have not even allowed a single workman or a single employee director to be appointed in any public sector bank in the country. One of the reasons why banks are doing so badly is because either the banks like IDBI didn't have a board and they were being managed by a joint secretary, or
even if they have a board, they don't allow any employee director or a workman director who can raise his voice to protect the interest of the bank. किसी कॉर्पोरेट का 60,000 करोड़ का लोन अगर राइट ऑफ होता हो तो उससे तो बैंक का घाटा है. आप सोचते होंगे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है. तो फर्क पड़ता है. कोई अकाउंट जब एनपीए होता है तो उस नुकसान की भरपाई बैंक अपने कस्टमर से ही करता है और उसका जरिया है अलग अलग सर्विस चार्जेस. और क्या आपको अंदाजा है ये चार्जेस कितने होते हैं? 2018 से 2025 के बीच भारतीय बैंकों ने अपने कस्टमर से 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ सर्विस चार्जेस के नाम पर काटे हैं. और इसके बावजूद सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट्स 13 लाख से ऊपर पाई गई सिर्फ एक साल के अंदर. There's a famous case in Tiruchi, Tamil Nadu, where a guy, whatever he did, he found that there was some service charge. Finally, he went to the bank manager and said, "Bas, enough. I want to close my account. This is a racket." All sorts of things. I mean, I do one little transaction here, you put service charge. I do another there, you put service charge. So, close my account. They closed the account and hit him with closure service charge. Closure charge. That also was a service charge. पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी. यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है. इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम. दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज. आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा. अगर आप चौथा 5वां ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है. इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना. यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है. फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है. फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है. ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है. जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं. और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है. साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है. और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है. यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है. म्हणजे बँका आता व्यवसाय करून उत्पन्न मिळवत नाहीत, तर बँका सर्व्हिस चार्जेस लावून ते उत्पन्न मिळवत आहेत. हे का आलं? कारण बँका तोट्यात गेल्या. बँका तोट्यात का गेल्या? कारण रघुराम राजांनी सांगितल्याप्रमाणे ऍसेट क्वालिटी इन्स्पेक्शन केल्यानंतर कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग खाली जे दडवून ठेवलेली मोठी कर्ज होती ती पृष्ठभागावर आली, ती सगळी एनपीए झाली. त्यामुळे त्यांचं इंटरेस्ट रिव्हर्सल झालं म्हणून बँका तोट्यामध्ये आल्या. Is this some kind of a new Robin Hood story where you loot from the poor and distribute it to the richest, or how do you look at it? It does appear to be a modern day reverse Robin Hood story. These banks are having to make up charges and charge poor people those charges, or ordinary people those charges, because they're not able to recover the money they're losing by lending to the rich. सर्विस चार्जेस लेना ये बैंकों का काम नहीं है. बैंक चलना ये सरकार की जिम्मेदारी है. लेकिन इसी सरकार से जब हम सख्त पॉलिसीज की अपेक्षा करते हैं तो सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आती है जिससे इस देश का आम नागरिक ही दिनों दिन लाइनों में खड़ा हो जाता है. जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन जैसे निर्णय.
डिपॉजिट करके विड्रॉ भी करना पड़ेगा. It's my grandson's birthday today and I want to buy him something, but I had no valid currency notes, so I had to come here to get some. हमारे बच्चे को टीबी है कलावती हॉस्पिटल में 6 तारीख से मैं एडमिट कराया हूँ. ESU में भर्ती है बच्चा, तो उसके लिए MRI में 5,000 रुपये चाहिए. इसको क्या करें हम? इससे ये कुछ चलेगा? कोई बर्थडे केक मिलेगा इससे? इससे कोई बर्थडे केक मिलेगा? क्या होगा इससे? और हमें कह रहे लाइन में लगो. A retired army man, Nandlal, broke down to tears outside the State Bank of India after waiting for hours in a never-ending queue outside a bank in Gurgaon. The demonetization, in my judgment, was thought as a kind of bazooka for solving the problem of the black money in the country. One of the objectives of demonetization was to reduce the usage of cash in the economy and to try and root out black money. And it would be fair to say that that objective has not been achieved. I think there was a large mistake in that conceptual thinking where cash was equated with black. Cash is money. Cash is not necessarily black money. A lot of businesses which were happening at that time, which were running on cash economy, because digital economy was only coming in. It was not there. Even in developed countries, Nordics, for example, today, literally have a cashless economy. And in our case, it was all cash, right? So if you try to take the cash, which is the note, out, it will cripple the economy. Both the economies, the good and the bad. Bad less likely than the good. So the original plan was that overnight we are going to stock all the ATMs with 2,000 rupee notes so that kuch to haath mein note hai, you're just walking to the ATM and getting it. But in their stupidity, they did not get the size of the note right, because somebody was saving money on the size. They made it smaller, and the ATM socket, which is automated, had to have a certain size note, and they made a smaller note. So the entire ATM system was useless. As a journalist, because I have been talking to so many people, I know that this played a huge role in extending the pain, and it has solved nothing, because all the money has come back. Every bit of it. In fact, when the notes came back, the 1,000 rupee notes, money was stacked there, not being incinerated, even after it was demonetized, because the government was making RBI count and recount that money several times. They found it so hard to believe that it was all coming back, and there was no black money that went out of the system at all. Because everywhere there were fixers and touts who just helped to take care of it. Demonetization had a few other corollary objectives, which have been reasonably achieved. One of those objectives was to reduce the use of cash for transactions and to push the public in general towards digitization. I think that has certainly happened in a big way. I think that part cannot be denied. At some point in time, it was our assessment that about 95% of the economy was run on cash. Today, I think it's less than, it's about 50% or so. Digitalization is inevitable. We have to make use of modern technology to make these banking services or all services more efficient. At the same time, we have a reality where almost 70-80% people are not very literate. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला बँकिंगचं क्षेत्र कसं डिजिटलाइज झालं त्याच्यावर एज्युकेट करायला कोणीही पुढे धजावलं नाही, एकही बँक पुढे गेली नाही. आणि शेतकऱ्याला बँकिंगचं नॉलेज त्या अर्थानं विचार केला तर नसल्यात जमा असल्यासारखं. जिथं मोबाईलला नेटवर्क नाही, तिथं टावर अजून बसवलेले नाही, अशा परिस्थितीत माझ्या संभाजीनगर तालुक्यात माहुली नावाचं गाव आहे. त्या शेतकऱ्याला तिथल्या अजूनही तिथून 1 किलोमीटरवर अंतरावर येऊन डोंगराच्या बाहेर आल्यानंतर नेट उपलब्ध होतं आणि मग तो मोबाईलवर बोलतो. त्यामुळे तिथं त्या फोनपेचा किंवा गुगलचा किंवा या सगळ्या डिजिटलाइज व्यवस्थेचा त्याला काही उपयोग होत नाही.
In a lot of rural families, the mobile is only in the hands of the man of the household or his sons. The women have no access. So we could argue that UPI is in everybody's hands, but it's not in everybody's hands. Government and bank, they are confronted with the issue of transaction cost. They feel that to extend the banking to rural areas, backward areas or Adivasi areas, banking is unviable. And in order to make that banking viable, they are resorting to this alternative business model, which they call it as a banking correspondent. Within the costing of one clerk's salary, 4 or 6 banking correspondents can be appointed. Which means that in a country with extremely high corruption, you told the poor people, ye banking correspondent sab kuch karega, so he has everything. These people trustingly have allowed them access to their Aadhaar and everything else. They also paid the banking correspondent on the number of transactions. So I know that there are cases where they just ran up transactions so that they could get money from the banks. So decimating accounts happened, stealing happened directly from the correspondence itself. In fact, Reserve Bank of India time and again has been saying that the core activities should not be outsourced or contracted. But what is core and what is non-core, which RBI has not defined. Preparing a data or scanning of signature or even this KYC. In fact, all those are the core activities which banks should not outsource, or they should not extend the contract system for that. But banks are doing it. Today, it is a challenge before the banks now how to attract the customers, savers, and ensure that they are being adequately rewarded. Well, banks may not be able to offer higher rate of interest, but they can give a better service. It is a challenge before the banks to see how to keep the depositors satisfied. And technology is one thing which will certainly help up, and another one is to take care of their requirements. If this continues further, there will be liquidity crisis and the banks will be in great problem. The developments which are likely to take place in the days to come. One is crisis in retail NPA. It will mount like anything, mainly because of unemployment, mainly because purchasing power is getting reduced, and the way in which banks are imposing the banking product and services on the layman, all ultimately will result into a crisis. But reality is that we are a very poor nation. Although our economy may be 5th largest or soon to become 4th largest economy, the country is rich, prosperous, ranks high in the world economy. But if you look at the per capita income of the Indian people, it's an abysmal picture, a very sad picture. We are, in the per capita terms, 140th in the world. तो सवाल इकोनॉमी के साइज का नहीं हो सकता. सवाल ये है कि आम आदमी इस इकोनॉमी में कहाँ है. रुपी इज एट इट्स लोएस्ट. भारत का ज़्यादातर पैसा टॉप 1% लोगों के हाथों में समाया हुआ है. बाकी का भारत प्राइवेटाइज हो रहा है. डेवलपमेंट बैंक्स खत्म किए जा रहे हैं. और इस सब के बीच लाखों बैंक एम्प्लॉइज रोज पब्लिक का गुस्सा झेल रहे हैं. बैंक भरोसे पर चलती है, लेकिन बैंक ही अगर जिम्मेदारी लेना छोड़ दे तो आम जनता किसके तरफ देखेगी. सरकार अगर अपने बैंकों को नहीं चला सकते तो हम ये कैसे यकीन कर ले कि वो पूरे देश को चला पाएगी. हमें पता है कि ये फिल्म किसी जवाब तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये एक सवाल की शुरुआत है. अगर इस वक्त हमने सवाल नहीं उठाया तो शायद ये सवाल कई और सवालों की तरह हम कभी नहीं उठा पाएंगे. If this whole system is an illusion, who's the magician here? The structure of the system, which is the rules and the law and the penalties and the punishments, are for the people at the bottom of the pyramid. The architects of it are at the top of the pyramid.
First of all, for them, the rules are made of smoke. They're blowing through those rules whenever they feel like it. And there's just an illusion of structure at the top. They're doing whatever they want. माया मन का मंदिर घंटा सबका बड़ा है ज्ञान, तो बोलो साथी कौन बचाए जान। क्योंकि बिखरी प्रजा और जनता डरी यहाँ सांसत में अब जान। हाँ देखो साथी राजा लगाए ध्यान। जे दिन गाज गिरिया पापे, जे दिन गाज गिरी दादा पे, जे दिन गाज गिरी छोटे पे, जे दिन गाज गिरी दूजे पे, सांसत में थी जान, सांसत में थी जान। हाँ लेकिन उस दिन सुन पड़े थे कान, हाँ लेकिन उस दिन सुन पड़े थे कान।